Collaboration is the name of the game. And that is why collaborative leadership is becoming more and more popular. इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी कि कौन से 5 प्रिंसिपल्स हमें माइंड में रखने चाहिए कोलैबोरेटिव लीडरशिप एस्टैब्लिश करने के लिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि कोलैबोरेटिव लीडरशिप इज अबाउट टेकिंग पीपल अलोंग, अंडरस्टैंडिंग एवरीबॉडीज स्ट्रेंथ एंड गिविंग देम अ से, गिविंग देम द स्पेस टू शेयर देयर व्यूज एंड ओपिनियंस। और इसका मतलब है कि अगर कोलैबोरेटिव लीडरशिप के कुछ पॉजिटिव्स हैं तो कुछ नेगेटिव्स भी होंगे। पॉजिटिव है कि अगर हम कोलैबोरेटिव लीडरशिप स्टाइल यूज करें तो वी ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ क्रिएटिव आइडियाज, वी आर एबल टू क्रिएट अ डिविजन ऑफ लेबर। हम वो काम बड़ी टीम में बांट पाते हैं अगर हम कोलैबोरेटिव स्टाइल से काम करें। लेकिन उसका नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि हम क्योंकि सब लोगों को लीडर जैसा फील करवाते हैं टीम में, तो हर लीडर को अपनी आवाज सुनना अच्छा लगता है, तो हर एक अपना व्यू टेबल पे रखता है और हर व्यू को अगर कंसिडर करें तो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगी ही होंगी। सो व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ कोलैबोरेटिव लीडरशिप स्टाइल, you have to learn how to manage conflicts better because it is bound to happen. But conflict is not always a bad news. In fact, conflict is a sign of growth. So let's move on to the 5 principles that you must keep in mind to create a collaborative leadership style. The first one is inclusive vision. Make sure that your team vision should also be aligned to that of the organization. And every member of the team should have a vision aligned to the team's vision, which in turn is aligned to the organizational vision. So that's the first principle of collaborative leadership. The second principle is to create network and not silos. So collaborative leadership का सबसे अच्छा एक पार्ट ये है कि हम साइलोज में काम नहीं करते। इट्स नॉट कि ये फंक्शन ये करेगा, वो फंक्शन वो करेगा। हम लोगों के एक्सपर्टीज समझ के उनके साथ एक नेटवर्क एस्टैब्लिश करके काम करते हैं। मतलब दीज आर माई स्ट्रेंथ्स, दीज आर योर स्ट्रेंथ्स, योर स्ट्रेंथ बिकम्स माई इनपुट समवेयर एंड माई इनपुट बिकम्स एन आउटपुट फॉर सम अदर टीम। सो चाहे फंक्शंस हम अनाउंस करते हैं, हम फंक्शंस क्रिएट करते हैं, लेकिन हर फंक्शन दूसरे फंक्शन को अपनी एक्सपर्टीज के साथ सपोर्ट करता है, एक नेटवर्क सा बन जाता है इंस्टेड ऑफ बिकमिंग silos. Third principle of collaborative leadership is asking questions. When you are practicing this style, then you don't want to give away answers all the time. आप एक ऐसा कल्चर क्रिएट कर रहे हैं जहां पर आप क्वेश्चंस पूछते हैं एज ए लीडर, ताकि आप अपनी टीम को इंकरेज कर सके ओरिजिनल थिंकिंग के लिए, आप उनके ओरिजिनल थॉट्स, उनके ओरिजिनल आइडियाज आपके साथ शेयर हो सके। सो यू क्रिएट अ कल्चर where you are not the one who knows everything, where you are the one who asks the right questions so that everybody can share whatever they know and then you're able to come up with the best solution possible. The fourth principle of collaborative leadership is involving people in decision making. ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है क्योंकि जब हम किसी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं तो हमारी कमिटमेंट बढ़ जाती है। हम उस डिसीजन को राइट देखना चाहते हैं, उसको पॉजिटिव देखना चाहते हैं, इसीलिए हम सब इक्वली कमिटेड हो जाते हैं टू मेक दैट थिंग हैपन। सो इफ यू टेल समबडी व्हाट योर डिसीजन इज, they will do as much as they want to do. But if you ask somebody to become a part of the decision and they are in agreement with the decision, they are fully committed and far more accountable towards making it happen. And the fifth and the most important principle is inspiration. Being an inspiring leader yourself, by which I mean bringing in a congruence between who you are as a person and who you have to be professionally. You cannot be two different people. Why? Because it's impossible to hide moral values. It is impossible to practice different social etiquette in different environments. So you need to bring in that level of inspiration if you are bringing in collaborative leadership as a style to lead your team. Let us look at these 5 principles again and make a very clear action plan on what exactly will you do differently to bring in collaborative leadership. Inclusive vision, creating network and not silos, asking questions, involving people in decision making, and being an inspiration.